Good evening. Today we will be talking about coastal regulation zones. So the idea is that coasts are a very important landform so far as our national economy is concerned. Coastal cities are very important. They are playing a pretty important role in our economy. काफ़ी प्रोडक्शन वहाँ पर होता है, काफ़ी सारे पोर्ट्स वहाँ पर बसे हुए हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर बसे हुए हैं. इनफैक्ट प्रोजेक्शन ये है कि जो कोस्टल सिटीज़ है और जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी और जो पॉपुलेशन का प्रेशर है दैट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज एज वी मूव अहेड. So it is extremely important that we are able to manage our coastlines well. The importance of managing the coastline can be understood from the fact that demands of the population living over there is only going to increase. Resources are not going to increase at the same rate. As a result of which resources have to be managed in an efficient manner. Similarly, associated with it is the risk of climate change, risk of sea level rise, risk of various erratic phenomena such as let us say tidal surges and some such events which may really harm coastal infrastructure, coastal livelihoods. So what should be done? What should we be doing? So what has happened is that the government has come out with coastal regulation zone notification 2018. Right now this is in the draft stage. Now we need to see how good this draft is. We need to see what was happening with the previous drafts, so on and so forth. So let us begin our discussion. Try to end it in like 10 minutes. Okay. So the first PPT that is coming in front of you is that of importance of coastal zones. तो इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा कोस्ट लाइन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है. ठीक है कि कितना बड़ा कोस्ट लाइन है. बाय द ईयर 2025 कोस्टल पॉपुलेशन आर एक्सपेक्टेड टू अकाउंट फॉर 75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो जैसे जैसे दुनिया के अंदर कोस्टल एरियाज के अंदर आबादी बढ़ेगी वैसे ही इंडिया के अंदर कोस्टल एरियाज के अंदर आबादी बढ़ने वाली है. More than 70% of the world's megacities, greater than 8 million people only cities are located in the coastal areas. Half of the world's cities with more than 1 million people are sited in and around estuaries. तो आपको समझ में आ रहा है वापस से है ना कि वहाँ पर काफ़ी शहरीकरण होने वाला है. एवरेज ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज. उसके अलावा कोस्टल इकोसिस्टम्स यील्ड 90% ऑफ फिशरीज, 80% ऑफ नॉन स्पीशीज ऑफ मरीन फिशेज आर कमिंग फ्रॉम दीज एरियाज. तो न्यूट्रिशन के हिसाब से, हंगर के हिसाब से, पॉवर्टी के हिसाब से, लाइवलीहुड के हिसाब से हर चीज़ में ये इंपॉर्टेंट है. काफ़ी मैंग्रोव्स, रीफ्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पाई जाती है. मैंग्रोव्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट players in our biodiversity. They sort of protect us from tidal surges, from wave destruction, so on and so forth. They are let us say there's a lot of biodiversity involved, biodiversity richness involved in the mangroves. So everything is basically associated with the coast, right? So these are some of the broad ideas. Now why am I discussing? Okay, of course tourism is also a very important point. So why am I discussing this with you? So if a question comes in front of you regarding coastal regulation zones, so you don't just start talking about CRZ. You give a brief intro to your answer, and in that brief intro you can sort of explain that okay, coastlines are very very important even now, and going ahead their importance are going to increase in so and so manner. So the examiner will be convinced that your theoretical base is pretty strong. This photograph that is coming in front of you, I have sourced it from PMF I.A.S. So this photograph sort of shows to you the different components of India's coastline. So there is Konkan coast, there is Malabar coast, there is Coromandel coast, and then there is of course the Utkal coast. So we have, so if you were to just make this kind of a diagram over there and explain the benefits of the coastline, and what role does it play so far as economy, ecology and habitation is concerned, so you give a decent enough grounding to your current affairs ka answers. Okay. So now let us come to the present topic, that of coastal regulation zone notification. So this is the third iteration. So 1991 there was this iteration. 1991 policy was there, then 2001 policy was there, and now we have come out with the draft in 2018. So we need to look at what has happened in the previous two, and we need to look at what is happening in the present one. So the 1991 coastal CRZ notification was criticized for not being implemented. It was criticized for being violated, and in fact Supreme Court के अंदर केस चला गया था Indian Council for Enviro Legal Action, wherein Supreme Court had basically scolded the government for making a law and not implementing the law. So that kind of a problem still exists in society. It is not as if that was a problem in 1991. Very recently Supreme Court made some very damaging observations regarding the Crystal Plaza fire. बॉम्बे के अंदर एक बिल्डिंग है क्रिस्टल प्लाजा, वहां पर आग लगी, 4 लोग मर गए, काफी लोग इंजर हो गए. तो उसके अंदर कैसा था कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं था उस बिल्डिंग को, और उसके बावजूद वहां पर लोग रहने लग रहे थे. उन्होंने लाखों रुपए देकर घर ले लिए थे, और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ना होने के बावजूद भी वो बिल्डिंग के अंदर रेसिडेंट्स रहने लग रहे थे. तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये आप मजाक कर रहे हैं. आप अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई लॉ बनाते हैं कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए बीएमसी से, उसी के बाद ही वहां पर लोग रह सकते हैं, और ओसी नहीं मिला उसके बावजूद भी लोग रहने लग रहे हैं, तो आप लोग करने क्या लग रहे हैं? मतलब आपने लॉ बनाया वो आप इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं.
तो वही चीज 1991 की इस पॉलिसी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर आपने लॉ बनाया तो फिर आप उसमें इंप्लीमेंट करिए ना। any which case, by 2011 we had come up with another policy document. So what the good thing about this 2011 notification of CRZ was that it was a very consultative process that had gone into making of this kind of a document. पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करा गया था। मीनिंग क्या है कि सपोज कर लीजिए कि हमारे को कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाना है। सपोज कर लीजिए कि मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और मेरे को बनाना है, तो मुझे वहाँ की जो जनता जनार्दन है उनसे कंसिडरेशन उनको कंसल्ट करके उसके बाद बनाना है, उनको इन्वॉल्व रख के बनाना है। और हर एक प्रोसेस के अंदर जो भी उनके ऑब्जर्वेशन है उनको रिकॉर्ड करना है और उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मुझे अपने प्लान को मॉडिफाई करते हुए चलना है। तो आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी बनी थी वो भी काफ़ी बातचीत करके बनी थी और वो जो आगे काम भी होने वाला था वो काफ़ी बातचीत करके होना चाहिए था। उसके अलावा इस पॉलिसी के अंदर दे हैव टॉक्ड अबाउट डिमार्केशन ऑफ हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, they have talked about demarcation of ecologically sensitive area, they have talked about demarcation of critically vulnerable coastal areas, they have talked about drawing a hazard line. What is a hazard line? That beyond this line anything that is being constructed or being developed can tomorrow become can fall in the line of danger because of climate change and associated risks. So we have to be able to make that kind of a hazard line. It is supposed to be based upon scientific predictions कि यहाँ तक हमारे को खतरा है, इसके आगे हम रिलेटिवली सेफ है। तो आप देख सकते हैं कि 2011 के अंदर वाली जो पॉलिसी है, जो नोटिफिकेशन है, उसके अंदर काफी जो बोलते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी। अब 2011 के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? The problem was that in spite of the fact that the notification was pretty good, it was pretty consultative and everything, but it was not really implemented ever. And you in that you have to be able to in a detailed manner say that what went wrong. So the first thing that went wrong that जो demarcations की मैं भी इतनी तारीफ करते रहा है कि ये बात करी थी, ये डिमार्केट करेंगे, वो डिमार्केट करेंगे, वो कुछ करा ही नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हाईटाइड लाइन है वो भी हमने अभी 2017 के अंदर बनवाई है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट करके एक चेन्नई के अंदर बॉडी है, उन्होंने ये हाईटाइड लाइन बनाई है। अब जो हाईटाइड लाइन बनाई भी है वो इतना ओपेक प्रोसेस के थ्रू बनाई है कि दे हैव नॉट कंसल्टेड द पब्लिक। इनफैक्ट द प्रोसेस इज नॉट ओपन इवन फॉर चेकिंग बाय पब्लिक अथॉरिटी, बाय सिविल सोसाइटी, बाय नॉर्मल सिटीजन्स। तो कुछ लोगों ने क्या करा, आरटीआई वगैरह करके डिटेल निकाला कि हाईटाइड लाइन क्या है, और उसके अंदर मालूम पड़ता है कि दे हैव बेसिकली व्हाट दे हैव डन इज दैट वो हाईटाइड लाइन काफी इनएक्यूरेट तरीके से बनाई है, ऐसा सिविल सोसाइटी वाले क्लेम करने लग रहे हैं। काफी ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को बाहर छोड़ दिया गया है। और ये तो चलिए हाईटाइड लाइन जैसी भी जो भी बनाई तो है, बाद बाकी जो डिमार्केशन करने तो वो डिमार्केशन करे भी नहीं। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू ड्रॉ कोस्टल, जो मैंने आपको अभी बोला, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान बनाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो यू रिक्वायर द काइंड ऑफ एबिलिटी टू बी एबल टू कम अप विद दिस काइंड्स ऑफ प्लान एंड एक्चुअली इम्प्लीमेंट देम, व्हिच इज क्रिटिकली लैकिंग। There are various dilutions that have happened of this 2011 notification by way of amendments, and many of these amendments were not even available in the public domain as a draft for you to be able to see and to be able to critique and to be able to talk about. So what has happened is that in a very clandestine manner क्या है ना कि कोई भी पॉलिसी को चेंज कर दिया जाता है, एंड आफ्टर एक बार बनाया अच्छा, उसके बाद उसको चेंज कर देगा, यू आर डिफीटिंग द ओरिजिनल पर्पस ऑफ इट। एंड लास्ट थिंग इज दैट पुअर एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर्स। अब जो 2018 की पॉलिसी बनाई है, अब उसके अंदर हमने जो 2011 के प्रॉब्लम्स थे उसको कोई भी कोई ऐसे स्टेप लेते हुए हम दिखाई नहीं दे रहे हैं कि उन प्रॉब्लम्स को हम ओवरकम करें। इनफैक्ट नए प्रॉब्लम्स आ गए। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट हैज कम इन दिस 2018 नोटिफिकेशन इज दैट देयर इज अ क्लियर लैक ऑफ कंसल्टेटिव फ्रेमवर्क for formulating the policy. So what has happened is that those who have come out with these notifications, they have spoken with government officers, and based upon their interaction with, let us say, chief ministers of coastal area states and bureaucrats, higher level bureaucrats, sitting in various secretariats in the states, they have come out with this policy. So there is no consultation with people on the ground, there is no consultation with district administration which is actually going to implement the policy in practical areas. So there is no consultation with them. Now when this policy is being made in this manner, obviously there are going to be red flags that are being raised. One another criticism is that this notification has been this draft notification has been made by Shailesh Nayak committee. The high tide line का जो demarcation था, that was also chaired by Shailesh Nayak. So what has happened is that high tide line which was demarcated has been uncritically accepted as correct in this policy. So that is also being red flagged. वो तो जो हाई टाइड लाइन का जो आपने डिमार्केशन करा था उसको आपने कंसल्टेटिव तरीके से नहीं करा था, लोगों को दिखाकर नहीं करा था, तो चेकिंग नहीं करवाई थी। इट डजंट मेंशन एनीथिंग अबाउट हजार्ड लाइन। तो क्लाइमेट चेंज की खतरा आगे चलते हुए बढ़ने वाला है और हमने हजार्ड लाइन के कॉन्सेप्ट को डिलीट कर दिया है। Deliberate exclusion of stakeholders from consultation, it shrinks area under protection and it opens up coastal areas for activities with diluted safeguards. आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर बिल्डिंग्स बना देंगे, रोड्स बना देंगे,
पोर्ट्स बना देंगे, और ये सारी चीज़ें बन जाने के बाद हम बोलेंगे अब तो ये बन गया, अब इसका कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो उसका नुकसान होगा, फिर उस एरिया के अंदर नुकसान हो जाएगा, एंड देन वी विल सी दैट चलिए अब हम सारी चीज़ों को रिव्यू करेंगे। We don't want to do this. We don't want to repeat Kerala kind of a thing everywhere in the country where environment को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करवाना चाहिए, डेवलपमेंट करवा दिया, उसके बाद फिर सारी चीज़ों के अंदर तबाही मच गई, एंड देन वी आर सेइंग कि अरे हमारे को अभी सारी चीज़ों को रिव्यू करने की जरूरत है। वी डोंट वांट दैट। There is increasing pressure on coastal areas which is endangering livelihoods, right? We need to take care of this. कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान के अंदर बोला गया था कि 2011 के अंदर कंसल्ट करेंगे पब्लिक के साथ, और वो कंसल्टेशन मैंडेटरी है। 2018 के अंदर ऐसी कोई बात नहीं करी गई है। सिमिलरली 2011 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग कंसल्टेशन फिशिंग कम्युनिटीज, जब उनके घर बनाने की बात आई तो विल कंसल्ट विद देम, उसको डिलीट कर दिया है। पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई की जो बात थी उसको डिलीट कर दिया है। सो व्हाट यू सी for yourself is that 2018 notification is a pale shadow of 2011. In the way ahead, what you need to be able to point out, this is sort of a conclusion of your entire answer, that देखिए जो कोस्टल एरियाज है बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है, हर मायने में इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, but they are also very very fragile. They are also very very highly productive. So we need to take care of these areas. We need a strong, well informed, participatory framework. These kind of adjectives sort of आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प करते हैं। इफेक्टिव एंड इक्विटेबल गवर्नेंस होना चाहिए। इक्विटेबल इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो अमीरों के फेवर की डेवलपमेंट है वो हो रही है और गरीबों को आपने छोड़ दिया है अपने मीन्स के ऊपर सर्वाइव करने के लिए। दैट शुडंट बी हैपनिंग। यू शुड बी एबल टू रिमूव द कॉजेज फॉर सब ऑप्टिमल इंप्लीमेंटेशन ऑफ 2011 पॉलिसी। तो जितनी भी वीकनेसेस हमने 2011 की आइडेंटिफाई करी है, आप अगर उनको निकाल ही नहीं रहे और उनको बिना निकाले ही आप आगे बढ़ने लग रहे हो, तो फिर आप आगे ही क्या बढ़ने लग रहे हैं। एंड यू शुड रादर बी एबल टू स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स एंड प्रोटेक्शंस। So my idea to you is that you have understood the importance of coasts. You have understood, what kind of a coastal structure that India has. You have been able to look at the policies in 91, 2011, and now the draft 2018 notification with pros and cons and some sort of a way ahead. तब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अगर आप 150, 200, 250 शब्दों के अंदर लिखकर आ जाते हैं, you will be able to score decent marks. इसका जो भी नोट्स है that is available on our blog, उसमें से आप अपना नोट बना सकते हैं। Thank you very much. Have a great day.